as mentioned here in your books, everyone knows this verse. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Sada tarjama here in your books that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the father of any one of your men, but rather he is the messenger of Allah. He is the messenger of Allah. And he is the seal of the prophets. He is the last of the prophets. I'm not going to do tashri upon this. Lekin Imam Ibn Jarir al-Tabari, they say what? In their tafsir, Jami' al-Bayan, or Imam Ibn Jarir al-Tabari, from the mutaqaddimeen, from the earlier mufassirin, they say what? That Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that personality who brought the arrangement and the succession of prophethood to an end, and he placed a seal upon it. Yani the door of prophethood is now closed, sealed. Al-Batta, now, after him, until the day of judgment, this door of prophethood will not be open for anyone. Will not be open for anyone. उस पर ये भी दलील है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना. ये भी दलील है टॉप ऑफ पेज 43. कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ. और हदीस मुबारका दलाइल अपॉन दलाइल. Like this example here, number 1, Nabi Islam said what? That the example of me, mathali wa mathalul anbiya'i, and the example of the prophets before me is like that of a person who built a beautiful house. Jiski कहने Darul Anbiya. What's the name of the house? Darul Anbiya. And one corner of the house has been left empty. Yani a space for one final brick has been left in that house. People will enter the house. People will walk around the house. And people will see and they'll conclude, what a beautiful house. Lekin they'll come to that one final space and they will say that why has a brick not been placed here? Nabi Islam said, I am that brick. Subhanallah. Ye Bukhari Sharif. I am that brick and I am the last prophet of Allah. Aqidah Khatm Nabuwat. Nabi Islam does bayan through his own blessed words. फिर आखिरी रिवायत ये bottom of page 43, Nabi Islam said what? Indeed Allah has folded the entire earth for me and has shown me its west and its east. Abu Dawud Sharif, Hadith Sharif number 4254. Agli gal, Nabi Islam said there will be 30, how many? 30 deceitful liars from within my ummah. Each and every one of them, they will claim to be a prophet. But Nabi Islam said what? I am the last prophet of Allah, and there is no prophet after me. There is no prophet after me. La nabiyya ba'dahu. So Nabi Islam himself told us that there will be 30 Dajjal. The first from amongst them was what? Musaylama al-Kadhdhab. Dore Khilafat of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Battle of Yamama. Sahaba Ikram. Without any reservation. Even those who participated in the Battle of Badr, they also went to Yamama as well in order to defend Aqidah Khatm Nabuwwat. 1200 Sahaba Ikram became shaheed during the Battle of Yamama to defend Aqidah Khatm Nabuwwat. Siddiq Akbar himself was ready to go. Lekin Mawla Kainat said that, Ya Amir al-Mu'mineen, if you go to the Battle of Yamama and if you are martyred, then what is to become of the Muslim Ummah? Khalid bin Walid was made commander-in-chief. Saifun min suyufillah. Ye koi mamuli cheez nahi. Just to put it into perspective, during the 11 years in Medina Sharif, from the Battle of Badr to the very last battle, during the lifetime of the Prophet ﷺ, Kamo Pesh, around 220 Sahaba became shaheed for the sake of Islam. Lekin ek jang mein, in the Battle of Yamama, kitne? 1200 Sahaba Ikram. 11 साल में 220 Sahaba Ikram Kamo Pesh. Lekin ek jang mein 1200 Sahaba Ikram became shaheed. Which tells you and me the importance of Aqidah Khatm Nabuwwat. And that Aqidah that Siddiq Akbar defended then is the very same Aqidah that our ulama defend today as well.
और ये फख्र की बात है, ये नाज की बात है that ये सब हमारे हैं. That those who defended अकीदा खत्म नबूवत, each and every one of them are from the Ahl Sunnati wal Jama'ah. पीर सैयद मेहर अली शाह साहब हमारे हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी हमारे हैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी हमारे हैं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अल अजहरी हमारे हैं, और इसी तरीके से अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमुन नबिय्यीन हुजूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हैं. और ये अहले सुन्नत की यानी खुसूसियत है. You will not find any other maslak that will defend अकीदा खत्म नबूवत like अकीदा अहले सुन्नती वल जमाअह, the people of the अहले सुन्नती वल जमाअह. और इस पर कोई compromise नहीं. Those who do not believe in the finality of the prophethood of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, those individuals have nothing to do with Islam. तो वो कादियानियन, मिर्जायन, अहमदियन जो कुछ है, लेकिन इन्होंने शरारत देखो. That now they are trying to bury their deceased in Muslim Qabristan. They are opening radio stations in London in the name of Islam. Our Muslim youth are marrying Qadianis, going and doing business with Qadianis, eating from Qadiani homes. लोगों को पता ही नहीं. तो जब बयान करो तो मौलवी साहब बने डाले होंगे जी. ये भी हमारी freedom of speech है. We're not inciting hatred or violence against anyone. लेकिन पहचान रखो, पहचान रखो. These are wolves in sheep clothing. और मैं भाया ना, and I'll do wazahat upon this again, that when it comes to Aqidah Khatm Nabuwwah, there is no compromise. We are willing to give our lives to defend Aqidah Khatm Nabuwwah. लेकिन ये बदकिस्मती है ना, तो अकीदा खत्म नबूवत पर हमला हो गया जी, ऐसा सारे गूंगे हो गया. नामूस रिसालत पर हमला हो गया जी, सारे गूंगे हो गया जी. ये मौलियाना मसला जी. तहफ़्फ़ुज़ अस्हाबे रसूल और बाकायदा आले रसूल पर हमला हो गया जी, तो सारे गूंगे हो गया. अकीदे की बात करा, नहीं मौलवी साहब नमाज की गल करो जी, नमाज की गल करो. अजीबो गरीब यार, नमाज की बुनियाद अकीदा है. रोजा रखना, ज़कात देना, हज पर जाना, ऑल ऑफ आवर अमाल 4, 5, 6 घंटे हो गए पूरा जोर लगा रहा. अच्छा जी नहीं तो मसला समझत फिक्र हल पा ही सकने, फिक्र ही सकने. बुनियाद ऑफ आवर अमाल बीइंग एक्सेप्टेड इज हैविंग सही अकीदा. बस गाली थी खत्म है. तो मेरे रहने सिर्फ एक ही मिनट. Part 2 is now finished. मुबारक हो जी. और ये ना समझो मौलवी साहब थकी गए. मैं भी मेरे गले में थोड़ी देर स्पीकर ना होना. You can feel the tension in my throat. थके ना अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं कोरोना नहीं यार, कोरोना ऐसा कुछ नसना है. क्या समझ रहे हो? बहरहाल, I did say 8:30. I'm not going to outstay my welcome. बाकायदा Signs of the Last Hour. ये तो सारी किताब है. मैं लिखी हुई तो सावस्ता है. This cost us nearly £2,500 to print. Those afraad who mashallah contributed to all of it, Allah tabarak wa ta'ala give them ajr wa jaza. एक असले डॉक्टर रहील साहब, डेंटिस्ट, मेरे स्टूडेंट फ्रॉम स्कॉटलैंड, एडिनबरा, किबला हुजूर शेख आलम रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद खास. मैं परेशान से मैं 2000 को कितू कड्डा. मैं बुढ़ी क्या है कमेटी तैयार कर, लेकिन उन्होंने मैसेज किया तो ना है इमाम साहब मेरे तरफ 500 पाउंड. मैं तो हैरान हो गया. ना कोई पूछा, ना पालिया, ना अपील, ना इस तरीके ना कोई होना ना. वो आजकल गिफ्ट पेज, जस्ट गिविंग जो कुछ है, कुछ काखी नहीं. Within 24 hours पूरा पैसा हो गया. You know the brothers from Bolton, alhamdulillah, Dr. Kamran हो गए, जिस तरीके ना solicitor भी, डॉक्टर भी, सारे उन्हें आगे इमाम सब बेफिक्र हो. तो सर जाओ पढ़ाओ, बाकी असा इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करिए. So these books are for you guys. जाओ कार इस तरीके ना खुद पढ़ो, बच्चे की भी पढ़ाओ. तो इस तरीके ना कुछ ना कुछ हासिल करो. बहरहाल here just look at the board. Just going through the last few points here. मैं किताब भी बंद करी हो रही हूँ. Signs of the Last Hour are in your book as well. Minor and major signs. ये सिर्फ तो सनी यानी so you know what's in the book, yes? मैं पढ़ाना नहीं हूँ. सिर्फ just flicking through the pages. Page 44. Day of Judgment, which we know will be 50,000 sanatin, 50,000 years long. उस पर भी यानी तवील गुफ्तगू है in your books for 8 pages.
yes, regarding al-mizan. आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया, all of that discussion is there. What will happen on the day of resurrection, the hisab, al-mizan, as-sirat, al-hawd, shafa'a, all of these things mentioned in your books. Then we've got aqidah in the last article of faith. Life after death is also in your books as well. The seventh article of faith, wal-ba'thi ba'dal maut. ठीक है? और इसी तरीके से discussion on the barzakh as well. Those whose bodies won't decay and be perished in the grave, bottom of page 59. फिर our aqidah regarding the questioning in the grave as well. Man rabbuka, ma dinuka, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Then top of page 61, the people who will not be questioned in the grave, who they are. Then Jannat and Jahannam is in your book as well. A brief description regarding paradise and the hellfire. Like I alluded to earlier, the life of the prophets in the grave as well. Evidence is the light of Quran and Sunnah on page 63 onwards. ठीक है ना? तो ये मररतु बिक़ब्रि मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही. That riwayat is mentioned as well here. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna. वो भी riwayat mentioned here as well. और इसी तरीके से other narrations are mentioned here on page 64, page 65. That's part 3, section 1. थोड़ी जी इस पर मालूमात तो ही है. फिर आखिरी जो इस तरीके का हिस्सा है, the third last part here, part 3, section 2, page 65. पहुंची गया जनाब, don't worry, destination पर पहुंची गया. The obligation of loving and honoring the Sahaba Ikram. Say Subhanallah. Or last 2 points now. These 2 points on the board. First point that I want to illustrate before we do dua is that the greatest human being, Afdalul Bashar Ba'd al-Anbiya, bit-tahqiq, is no doubt Yare Ghar, Yare Mazar, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq. Then Sayyidina Umar Farooq, then Sayyidina Uthman Ghani, then Mawla Kainat, Sayyidina Ali Murtaza. Radiyallahu ta'ala anhum. Anyone, number 3 here, anyone who goes against this consensus, shabash. Anyone who goes against this consensus, that person is outside the folds of Ahl Sunnati wal Jama'ah. How do you get the laser on again? This is the laser. Achha. Anyone who goes against this consensus is out of the folds of Ahl Sunnati wal Jama'ah. Bas. कोई वजाहत की जरूरत नहीं. The one who does inkar of the afdaliyat mutlaqa of Siddiq Akbar, bas. आजकल जी जुज़ी फज़ाइल, yani individual merits regarding certain Sahaba, they use them to establish afdaliyah. And that's not permitted. जुज़ी फज़ाइल कौन इनकार करना? No doubt Fatima is bad'atun minni. No doubt Sayyidina Ali Murtaza, man kuntu mawlahu fa aliyun mawla. कौन इनकार करना यार? लेकिन याद रखो, ये अहले सुन्नती वल जमात की पहचान है, ये हमारी निशानी है. That no doubt we believe that afdalul bashar ba'd al-anbiya fi tahqiq is Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. And like I mentioned earlier on, ये नहीं and that सियासी एतबार पर, no, सियासी एतबार और रूहानी एतबार. और ये हमारा नारा है, the damadam maskal andar Abu Bakr का पहला नंबर, अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर, सैयदना उमर फारूक का दूसरा नंबर, सैयदना उस्मान गनी का तीसरा नंबर, मौला कायनात का चौथा नंबर. बस. और इस पर मैं I can sit here and give the right till midnight. बेफिक्र हो, I'm not going to do that. भी पता हूँ थके भी हो. लेकिन लोग आजकल क्या समझने that they can say what they want and get away with it? नहीं, alhamdulillah. Allah Tabarak wa Ta'ala has given us this salahiyat and He has given us this ilm and ma'rifat that we have pehchan of what the right aqidah is and we do bayan of that aqidah as well. Not to please anyone. Not to please anyone.
only to please Allah and His Rasul. हाँ? और इस पर ये गल समेटने आखिरी गल क्या है? Writing in black there. As I mentioned earlier on, गैर नबी cannot be greater than a नबी of Allah. हाँ? So ये हमारे यानी सीने में इस तरह होना चाहिए ना, मोहब्बत अस्हाबे रसूल और मोहब्बत आले रसूल. अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह. आजकल ये भी तमाशा लोग बनाए जी कि सहाबा का तज़किरा करो, उन्होंने दिफा करो जी, अहलुल बैत का मुनकिर हो गया और हस्बी हो गया जी, इस गन अगेंस्ट अहलुल बैत. ये किस तरह हो सकना? हाँ, न तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा. हाँ, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन पूत. लेकिन जिथे मोहब्बत अहले बैत लाजिम है, साथ साथ अदब सहाबा भी लाजिम है. ये नहीं था ऐसा अहलुल बैत का बड़ा मोहब्बत करने जी तो फिर सैयदना अमीर मुआविया ने गुस्ताखियां करने हो. फिर बकायदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अफदलियत पर यानी इस तरीके ना तुसा इनकार करने हो. होश करो. So again you can read these things in your own time. Virtues upon virtues, ahadith mubarakah upon ahadith mubarakah. We mention all of the names of the pure wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. ये भी उन्हें शरारत है ना, ये तफजीली जेरे ना, closet shias हैं. यानी नहीं ऐसा सिर्फ समझिए पंच तन पाक या अहलुल बैत. No यार, study the verses. अपना खुद इस कोई रिसर्च करो, अपनी तहकीक करो. No doubt, अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मुमिनीन, they are also from Ahlul Bayt Athhar. एक इस तरह हो सकना that you include the children but you exclude the wives. अजीब और गरीब. बारह थके हुए हो. इस तो बाद उनके गल रहनी है. इस पर गल समेटने हैं. पेज 71 खुश करी. और एक आखिरी बात है, इस पर इंशाअल्लाह गल मकाने हैं. Top of the page, Sayyidina Ali Murtaza says what? That the Prophet ﷺ took hold of Imam Hassan and Imam Hussein by the hand. Says Subhanallah. Imagine that manzil. Nana Jan taking hold of the hands of his Nawase, and then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says what? That whoever loves me, and whoever loves these two, and whoever loves their father Sayyidina Ali Murtaza, and whoever loves their mother Fatima to Zahra, no doubt that person will be with me on my level on the day of judgment. On the day of judgment. And oh Allah, we ask of you the bear witness. 29th of Jamadul Ula today. Maghrib Subah. 29th of Jamadul Ula. 1443. Oh Allah, bear witness that we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is पर तस्दीक है ना? आखो लब्बैक. That we love Imam Hassan al-Mujtaba, labbaik. We love Imam Hussein, labbaik. We love Sayyidina Ali Murtaza, labbaik. We love Sayyida Fatima Zahra, labbaik. We love Abu Bakr as-Siddiq, Umar Farooq, Uthman Ghani, labbaik. And we love all of the Sahaba and Ahlul Bayt Athhar. Labbaik. Labbaik ya Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. ये ना समझो सिर्फ पुराने वस्ता आए समझाने वास्ते आए. Like the brother asked earlier on a couple of questions. One or two of you also been asking questions. Lekin if there is any doubt in your mind, Mubin Sahib, if there is any doubt on anything that I have said or anything in the book, then feel free to ask any question. Maidan is open. Kuch nahi karna, lekin if you learn more than 3 things, pehle sawal si more than 1 thing, now the question more than 3 things. If you've learned more than 3 things today, put your hands up. Kuch nahi karna. Kuch nahi. If you didn't learn anything, keep your hands down. Main chanda ta na mangna. Right up in the air. Zindabad. 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 मेरे आने का मकसद पूरा है.
Allah tabarak wa ta'ala kabul karen. Allah izzat den, barakat den. Allah tabarak wa ta'ala keep us qaim wa daim upon aqidah Ahl Sunnah wal Jama'ah. Once